Praise God, this is Pastor Frederick DeCosta from Glasgow, Scotland, New Mercy Apostolic Ministry regarding Bible prophecy and Israel and Iran war. So people, they say is now they have a treaty, stop war, but it's not gonna be happen, it's not gonna be stay long. So is Iran going to break his treaty once again? For the short period, it's look like a peace, but it's not gonna be peace. थोड़े दिनों के लिए लोगों को ये लगेगा इजराइल और ईरान का समझौता हो गया, पीस हो गया, अमन शांति होगी, मगर ऐसा नहीं होगा. ईरान वापस उस जो ट्रीटी को, जो एग्रीमेंट को वो ब्रेक करेगा. इन अ प्रीवियस टाइम Iran also break the treaty 7th of October when he strike on Israel. So Iran have an agenda, a evil agenda against Israel. See, that it's not about Iran. It's about spiritual warfare. ये रूहानी जंग है. It's not a physical. You cannot see like physical. Yes, it's happened on physical, but this is the war, spiritual war. So all the nations, all the Islamic country going to be one. They're going to be unite, and all the other nation they became one and support Iran to against Israel. But the God of Israel, the God of Jacob, God of Abraham, God of Isaac, he will stand for Israel, because Israel is a chosen country. Israel is a chosen nations in the eyes of the Lord. So Lord God always stand for Israel. Israel परमेश्वर की चुनी हुई कौम है और परमेश्वर उसके साथ खड़ा होगा. सारी नेशन, सारी कंट्रीज एक टाइम पे इजराइल के खिलाफ होंगे, मगर इट्स नॉट गोना बी हैपन टू डिस्ट्रॉय इजराइल. दे हैव अ ड्रीम एंड दे विल डाई इन देयर ओन ड्रीम्स. वो एक ख्वाब में रह रहे हैं और अपने ख्वाब के अंदर ही मर जाएंगे. याद रखिएगा, थोड़े दिनों के लिए ये शांति होगी और इसको ईरान फिर इसको तोड़ेगा और वो अगेन इजराइल के खिलाफ जाएगा. सो बी रेडी फॉर द बाइबल प्रोफेसी. डोंट बी इग्नोरेंट. डोंट बी इग्नोर द प्रोफेसी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, because most of the people, they don't know the Bible, they don't know the prophecies. So as a Christians, so please read your Bible and focus on the prophecies which is already written in the word of God. So you take care. Shalom.